So I'll start now. I hope I'm audible. So I'll start by introducing myself. I'm Shilpa Khanikar. This year in UPSC CSE 2021 examination, I have secured All India rank of 506, and I'm an electrical engineer by profession. Uh, I did my graduation in 2017 from NIT Silchar, after which I started working briefly. I worked for about a year or so. I started preparing for UPSC CSE. I took my first exam, first prelims in 2019. That year, I could not clear the prelims. I missed the prelims by less than 2 marks. And that's when my real preparation began. After my 2019 prelims, I knew that I was somewhere there, and so I started preparing thoroughly for this examination. I decided that I would give one more attempt with full dedicated preparation, and I started preparing thoroughly. And it is after the first prelims that I was preparing for my exam and focusing both on prelims and mains, and it was a very integrated preparation. I gave my second prelims, which is in 2020. I think it was on October 4th of October or 10th of October, somewhere around those dates. I am forgetting. I knew that I would be clearing the GS paper, but unfortunately, the CSAT paper, I completely, I panicked, and I did not manage to clear the CSAT cutoff. I mean, just the qualifying marks for CSAT. And I was waiting for the results. I was preparing for mains. I was hoping that I would clear, because I did not see what kind of marks I got or anything. So मैंने फिर देखा नहीं, तो मैंने बस प्रिपरेशन स्टार्ट किया मेंस का. जिस दिन प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, it was on October 24th, I think, yeah, around that time. So I was completely shattered, and that's when, that was the lowest point in my journey, because in 2019 prelims I was not that prepared, and despite not being that prepared, I was able to secure a 96 point something, around 95, 96, around those lines. So not clearing that year, I knew that I am close, but in 2020, not clearing 2020 prelims was a setback. So, but I'll talk about my journey now. And then again, I continued my preparation, because I thought that, let's just give one more attempt, because I knew that GS was good. For the 2021 attempt, my focus was on CSAT. So I'll also share my CSAT prep in very detailed manner, because that's something that we as aspirants kind of ignore. And I know that most of us, come from, some of us come from science backgrounds, some of us come from engineering backgrounds, and we kind of take it for granted that CSAT तो हो जाएगा, वैसा करके एक attitude होता है. So those kind of things need to be avoided. This is in my 2021 attempt. I was able to clear. I knew my mistakes, because of which I knew that I could have secured a better rank probably. But okay, I am grateful for the rank I have received right now. But I know that where are the areas I could have improved. I'll talk about that as well. But let us first go in a very structured manner, right? So we know that this exam entails 3 different stages: prelims, mains, and interview, right? So 3 stages होते हैं. हर स्टेज की अपनी एक डिमांड होती है, अलग डिमांड होती है. इनका जो प्रिपरेशन होता है इंटीग्रेटेड वे से करना होता है, बट इनका जो फोकस होता है वो अलग होता है. एंड बिफोर ईच ऑफ दिस स्टेजेस यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट. You need to change your mindset, because let's say हम लोग start कर रहे हैं in a way that we are starting for let's say if we are attempting the 2023 attempt, I'm hoping that most of the people who are here to listen to this conversation are going to attempt the 2023 attempt, right? So if you're going to attempt the 2023 attempt,
I would say that you have enough time right now to go for an integrated preparation. I'll take up questions, but at the end, okay? So you have enough time right now, because I think the exam is on late May or early June, around that time. So you have enough time, and abhi ke liye you have to go for a very integrated prep. So the first preparation, it begins with knowing the syllabus. सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक प्रीलिम्स का, मेंस का, और इंटरव्यू के लिए कोई अलग से सिलेबस होता नहीं है. सो बेसिकली द सिलेबस इज फॉर मेंस. This is where everything is in. My optional was PSIR. I'll also talk about PSIR. One second. But before that, I'd like to talk more about prelims, because many of us fail in this stage and we cannot continue our journey further, right? So failing in prelims is a I know it feels like you are out of the race before the race even began. So प्रीलिम्स के लिए क्या करना होता है, क्योंकि मैंने एक प्रीलिम्स कुछ मार्क्स एक 1 point something से मिस किया था. सेकेंड प्रीलिम्स आई मिस्ड बिकॉज ऑफ CSAT, and I had 127.9 in GS. So I know that how to score marks in prelims, but what I did not do was CSAT. So I would talk about both GS and CSAT. So पहले हम लोग प्रीलिम्स का बात करते हैं. तो प्रीलिम्स में GS के लिए we more than talking about the sources, what is actually important is that when you are doing integrated preparation, जैसे कि आपको मेंस का सिलेबस पता है and आप मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रेप कर रहे हो, and what that entails is that you are thorough with the static portions of the syllabus. You are also well aware of the you are also well aware of the current affairs. So okay, some people are saying that I should discuss mains first, but I will discuss mains definitely. But what I am saying is the mistakes to avoid in that. I'll go in a very, because the exam first comes with prelims, and some of us do fail in prelims, right? This was my first mains, so I know that my failure was in prelims mostly. So I will talk about prelims, not a detailed strategy, but paper 1 and paper 2, a brief about it. So prelims के लिए what I would say is that continue with the integrated preparation. इसी में mains का prep we'll discuss. But when we are doing this integrated preparation right before prelims, like that depends on how good you are, and you will be able to analyze yourself through test series. You don't necessarily have to join a test series by paying. You can also buy them from the market. They are easily available. You can print them out and you can practice them at home. However, try to create a very exam oriented situation. By those, you will be able to judge where do you stand. But it does not mean that those test series are a reflection of what is going to come in the main prelims examination. वैसा नहीं होता है. The exam is totally different. The exam is going to be very different from what the test series are providing, but it will also help you analyze your prep for the exam, right? So and you will also feel like you have done enough MCQs, so basically वो डर हट जाएगा. सो वो आप कर लीजिए. लेकिन प्रीलिम्स के 3 महीने या 4 महीने, कुछ लोगों के लिए 4 महीने की ज़रूरत होती है, कुछ लोग 2 महीने से भी कर लेते हैं. एक प्रीलिम्स वाला वो माइंडसेट चेंज होना पड़ेगा कि हमको अभी क्वेश्चन सॉल्विंग, एलिमिनेशन, डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल उस मोड पे जाना पड़ेगा. और उससे पहले भी सम पीपल थिंक कि 5 days before the prelims examination, let us take CSAT, or let's not even do CSAT. It is fine for some of us who are able to score 120, 130, 180 in CSAT papers, without any prep. It is possible. It is the people who are doing it, but for some of us it's not possible, and that's why you need to gauge your prep for CSAT as well. How do you do that? Is take the recent CSAT papers, take the recent 2020, 2021 papers, and do them in a timed and exam oriented manner, right? So when you do that, you will understand at what stage are you. Are you failing the CSAT paper, or are you clearing it just by a few marks? You are getting 70, 75, 80.
No, those are not good scores. You need to be able to be confident. अगर आप घर पे बैठ के एग्जाम दे रहे हो तभी आपका अगर 70 आ रहा है तो एग्जाम मेन एग्जाम में तो और भी फॉल्टर करोगे. तो you need prep. What does this prep entails is it entails doing all the previous year at least 6 to 7 years CSAT papers. उसके बाद identifying the areas which you are strong at, doing those questions first, then identifying the areas which you are weak at, and then trying to find ways to do those areas as well. It also entails कि आप comprehension के जो questions है उनके answers okay, this was my third attempt. My first means some people are asking, so I'm clarifying. My first attempt in 2019 was not a prepared attempt. I prepared for few months and I gave the attempt. I missed the prelims by less than 2 marks, and in the next attempt I missed my CSAT. So that's why I'm talking about CSAT. उसके लिए मैंने what I did was I took YouTube से I took guidance. There are various channels. I'll not recommend a channel. Probably Adda 247 or some other channels are there. I'm not going to promote any channel, but there are many channels which are teaching those topics. Identify the important topics. For example, in the last prelims, I saw that CSAT paper. In the 2022 prelims, I saw the CSAT paper. It entailed a lot of permutation and combination. So you need to do that as well, right? You need to do the permutation and combination areas as well, right? Because those areas are generally neglected. So for this there are some books, but these are not the only books in the market. There will be other books as well, but the ones I did were I did this one Arihant. There is one Arihant book for CSAT, and there is another I think R.S. Agarwal. I think those books I did very selectively, not of course not thoroughly, but very selectively. But I knew in 2021 prelims that I'll not fail in CSAT. This was something very clear in my mind that I cannot afford to fail in CSAT. So this was my strategy. First you need to gauge, then you need to identify your strong areas, then you need to identify your weak areas, and identify the topics which are most asked. Also practice comprehension by a few books or by 1 or 2 books at the max, and keep on practicing. This does not have to be an everyday exercise, but if you are weak, then 2 days in a week, 3 days in a week, or maybe even weekly, that will also work. But not 5 days before the examination, not 1 month before the examination. You must be prepared before that. Anyway, about my prelims journey, I think I'll speak more through my mains journey, and then I'll shift towards prelims. So anyway, the next thing I'll take in a very structured manner. I have been provided a questionnaire as well, so I'll go by that, and at the end we will take all the queries, right? So about GS prelims के लिए मैंने बात किया थी, जो भी basic sources हैं, जो भी standard sources हैं वो करे थे. And about NCERTs, people are asking कि NCERTs करने हैं नहीं करने हैं, वो भी हम discuss करेंगे आगे जाके. ठीक है, पहले हम मेंस के ऐसे के बारे में बात करते हैं. So this time if you see, there were 8 essays. I mean, you have to write 2 from those 8, 1 from each section, and all of those had a very abstract and philosophical nature, right? So वो एग्जाम में जाके what happens is previous year के ऐसे papers देखेंगे. We will see that there were essays from the social issues as well, and other from the GS areas as well. So I also faltered in my essay paper, and that is the first paper. And the one mistake I did not write a single essay before this attempt. So this is one mistake to avoid. So I know a lot of toppers from our this year who have scored good marks, but this year essay scores are very less. I mean, the average marking is around 110, 12, 15. There are people who got 130, 140 as well, but that is lower than last year. So why did this happen is not very clear. I have also heard that some people with 140 marks got less marks this year. So I am not a perfect person to guide on an essay strategy because I did not have a strategy of my own. But what I would think if I could have done better is to
probably practice a few essays beforehand, and probably not panic in the exam hall. Not panicking in the exam hall is, 101 of this exam. I panicked in my CSAT in 2020 prelims. I failed. I panicked in the essay paper. And the marks are reflective of that. I got 110. It's not a great score great score, but this is not a bad score this year, I would say. But still, you could, 125, 130 is good marks. Around that अगर ला सकते हैं तो अच्छा होता है. तो उसके लिए आई थिंक कि पहले एसेज लिखने तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नहीं कि हर वीक लिख रहे हैं बैठ के. लोग वो भी करते हैं. It does not necessarily enhance your score, but you must write few essays before the exam. And जो मैंने गलत किया was that I did not, एग्ज़ाम हॉल की बात कर रही हूँ मैं. I used to get in 2020 after 2020 prelims I took a test series for essay. I wrote essays. Used to get good marks in those, but in my 2021 attempt, the one I wrote the mains for, उसमें मैंने essay नहीं लिखा. तो I had this कि लिख लेंगे एग्जाम में जाके, वो एटीट्यूड ले लिया जो कि गलत था. So I knew how to write essays, but what happened in the exam hall was I was taking a lot of time to decide which topic to pick up. So उसके बाद जब I even changed my topic, and उसके बाद क्या हुआ, that led to a kind of panic mode, and I saw that 25 minutes has already passed. So I now decided that I'll just pick up two topics which I'm most comfortable with and just start writing. So what I didn't do is what everyone does, is make a proper structure before writing an essay. Proper structure कि ये points हैं, वो करना होता है. वो मैंने नहीं किया. वो नहीं करने के कारण I think that reflected. But what I did was I ensured that मेरे essay में थोड़ा flow रहे, एंड मेरे ऐसे में जो भी लिखूं वो रेलेवेंट रहे. इसी कारण probably I did not score below 100, because I was thinking with the kind of panic situation that I went into, I would have probably scored less than 100. The only reason behind that is that I continued writing the essay, everything that was relevant to the topic, not anything irrelevant, and I tried to keep a flow. The second essay I could not complete. There was a lack of time. I missed the conclusion portion, and I'm sure that my marks got deducted in the second essay. So don't do this kind of things. You need to practice a few essays. और उसके लिए अलग preparation की ज़रूरत भी नहीं होती है, but हाँ, लिखने की ज़रूरत ज़रूर होती है, क्योंकि ऐसे जितना भी philosophical हो, आप उसको deconstruct कर सकते हो. Deconstruct कैसे करते हैं? I think one of the very good sources for this is Anudeep Durishetty sir. I listened to how eloquently he described his essay strategy. Is that deconstructing an essay into different parts, and everybody has their unique style of writing. Do not let your uniqueness get diluted. And deconstruction का ये भी मतलब होता है कि आप उसको simplify करो. जैसे कि the one essay I wrote was this one. The research is not just something about research. I am forgetting the title, but it was more about research and everything. So अब मैंने research topic को कि ये research ये ही नहीं, but ये इतना important है, वो दिखाना था हमको, something on that lines. तो research को लेके research में क्या क्या different areas हो सकते हैं जिससे मैं ये show कर सकती हूँ. जैसे साइंटिफिक रिसर्च से हम कोविड वैक्सीनेशन के बारे में बोल सकते हैं, हम कोविड में कितने स्ट्रेन्स डेवलप हुए उसके बारे में बोल सकते हैं. आई मीन करंट रिलेटेड बोल रहे हैं हम, और भी होंगे. अभी जैसे कि नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप के इमेजेस आए हैं. सो हाउ दैट हैज़ हेल्प्ड अस इन अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट द यूनिवर्स, राइट? सो this is how you will find out ki there will be different ways in how you can deconstruct a topic, and this will only come with a little bit of practice and brainstorming. But don't start writing essays right away in your preparation journey. You must be prepared somewhat in your GS papers as well. So GS papers का preparation पहले करना होता है, उसके बाद आप along the way you can start writing a few essays, and do not be boggled by the philosophical nature of the essays. This is what I did.
and I could have probably scored better marks if I would not have boggled and panicked in the few minutes. Okay, so mains के बारे में अगर हम बोले, mains में we know that we have 4 GS papers, 1 essay paper, 2 optional papers, 1 optional subject. So this is the structure of mains exam. There is also two qualifying papers. One is English and one is regional language of your choice. So the qualifying papers also need not be neglected. English तो फिर भी अगर आपका English का medium है तो फिर वो easily solve हो जाता है. But I have seen some people not clearing the this language paper, the qualifying language paper, which is very disheartening because they don't even get to see their marks, and probably they would have qualified the exam. Who knows? सो आपको लैंग्वेज पेपर भी बिल्कुल नहीं इग्नोर करना है. उसके लिए ज़्यादा नहीं, आपको 4-5 दिन लगेंगे. आपको बेसिक ग्रामर देखना होता है, एंड इफ़ यू नो हाउ टू राइट द लैंग्वेज देन यू विल सेल थ्रू. जस्ट नीड टू सी फ्यू पेपर्स बिफोर हैंड. सो दैट इज़ अबाउट द क्वालिफाइंग पेपर्स. बट अबाउट द मेन सिलेबस, मेन्स पेपर्स 4 जैसे कि पेपर्स होते हैं और ऑप्शनल. पहले ऑप्शनल की बात करते हैं. यहाँ पर ऑप्शनल सबका अलग होगा. जैसे कि मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था, एंड माय अर्ली ऑन इन माय जर्नी आई डिसाइडेड दैट आई विल start preparing for my optional. I'll decide my optional and I'll start preparing. I don't have a background in political science and international relations. I'm an electrical engineer. So how did I decide this optional? First question तो ये आता है कि हम optional को कैसे decide करें. तो ऑप्शनल डिसाइड करने में कुछ क्राइटेरिया ये होते हैं कि जब आप जर्नी में जा रहे हो तो आप इनिशियली न्यूज़पेपर पढ़ने से स्टार्ट करते हो. आप इनिशियली बेसिक बुक्स पढ़ने से स्टार्ट करते हो, बी इट NCERTs और बी इट लक्ष्मीकांत, बी इट इकोनॉमी का कोई NCERT हो गया, जियोग्राफी हो गया. तो आप उनसे प्रेप करना स्टार्ट करते हो एंड आप न्यूज़पेपर्स भी साथ साथ पढ़ते हो. तो इससे क्या होता है, आपको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता लगने लगते हैं. So I knew that I was very interested in current issues. I was very interested in international relations and social issues as well. So इस area को लेकर जब मैं interested थी, I was finding what optional papers correspond to those areas of interest. And I saw that I shortlisted some of the optional subjects, and some of which were psychology. Psychology was totally different. It did not have current affairs, but it also did interest me. And then there was political science and international relations, sociology, anthropology I did not select, but yes, I selected sociology as well. For some days I thought that sociology would be my optional, as I eliminated psychology. Given the technicality of the subject, I thought that probably it is not a good subject for me. So इसके बाद मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ नेक्स्ट, कि इसमें रिसोर्सेज कितना इजीली अवेलेबल है और इसमें गाइडेंस है कि नहीं. सो ये these were my questions. So I narrowed it down to PSIR because I found the syllabus more interesting. By no means I am saying that sociology is a bad optional or anything. Of course, I have not much idea about the subject, so I'll talk about how to select an optional. These are some of the criteria. Interest, your background. If you have a background in the subject, I knew that electrical engineering, because when we start the exam, we start with a mindset that we will clear it in the very first attempt, right? So I knew that I would not be able to complete 4 years of electrical engineering in 2-3 months, and of course I had some lacunas in my electrical prep during my graduation as well. So I thought of taking something else which would interest me and which would also overlap in GS. So this was my criteria for selecting the optional. And yes, I did take some guidance. I did take some help. I took classes with Shubhra Ranjan ma'am for optionals. It is not absolutely necessary. However, I had the resources at the time to go for the classes, and I did. However, even the market available notes would suffice. But all you need to do is answer writing practice. Even if you can't join a test series, you can write answers on your own, and you can get feedback from seniors. You will find seniors. The aspirant community is so helpful in UPSC, and that is one thing that I've found, that everyone is so sharing. So you need to take help of the community. You will find a lot of channels, a lot of Telegram channels
sharing out material, helping out students, YouTube channels providing knowledge for free. So take help of those resources as well. बाकी सबका ऑप्शनल अलग होगा, तो वी वुड नॉट डिस्कस कि ऑप्शनल का प्रेप कैसे करें, क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ you guys will be having different optionals, or some of you probably haven't decided an optional. So let me tell you one thing, that please decide an optional. If you are going to write 2023 attempt, you need to decide an optional right now. You need to decide your optional. You need to complete your optional within 3 months. Do not think कि prelims के बाद optional उठा के complete हो जाएगा. In my 2019 attempt, since I only prepared for few months before that, I did not touch my optional. I did not prepare it. So when I missed my prelims, I knew that it's probably fine. I wasn't prepared for mains as well. But in my 2020 attempt, I knew that I was prepared for my. That was my that was the year that I was most prepared. After that, I went into a low. So I think वो low से खुद को कैसे ऊपर उठाना है, that is also very important, right? We'll also talk about that. Let us talk about the GS papers. एक एक करके GS papers में detailed नहीं, क्योंकि detailed हम queries के through we will take, but we'll just discuss a brief about the GS papers and about how I went through it. So GS2 is one paper in which I scored well. So GS2 का prep कैसे किया, ये अगर बात करें तो इसके लिए अलग से प्रेप मैंने नहीं करा था. मैंने ज़्यादातर प्रेप अपने ऑप्शनल के थ्रू ही करा था. इंटरनेशनल रिलेशंस वाज प्रिपेयर्ड बिकॉज आई वाज प्रिपेयर्ड विथ माय ऑप्शनल, एंड बट देन अगेन उसमें बेसिक्स अलग होते हैं. थोड़ा बेसिक्स इसमें ज़्यादा चाहिए होता है, इसमें करंट ज़्यादा चाहिए होता है देन ऑप्शनल. In optional, static portions are also very important. Theoretical portions are very important. In GS2, some areas are different. But I was prepared because of my optional. That might not be the case with some of us, or many of us. तो उसके लिए अलग से भी prep करने की ज़रूरत होती है. And कैसे करें is that there are different areas in GS2. If you have seen the syllabus, you'd be knowing that what are the different areas. One is social justice. One is, of course, polity and constitution. Another is governance, and the last one is international relations. These are the broad areas of preparation. So international relations के लिए more than anything कि एक material उठा के पढ़ें. No, you don't necessarily need कि एक material. हाँ, कुछ जानने के लिए आप कुछ एक book refer कर सकते हो for understanding. But even वो नहीं भी करा, you will get some market available material to understand the history of relations between the different India and the other countries. Because what is mentioned in the syllabus is that relations of India with neighbors and important events affecting India's interest, and then about some bilateral treaties or bilateral events or multilateral events affecting India's interest. So it is mostly about affecting India's interest or about India's concerns. So most of the preparation for international relations will be through कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से. तो बेसिकली इन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और अब जब पढ़ते रहोगे आपको कुछ और एक चीज़ भी समझ आएगी कि वर्ल्ड हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस का कनेक्ट भी आपको समझ में आएगा. वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है. इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए फॉर बेसिक्स आप कोई एक बुक उठा सकते हो, पर ये एकदम नेसेसरी नहीं है. आप अगर करेंट न्यूज़पेपर को भी थॉरोली पढ़ रहे हो तो आपको विथ टाइम बहुत कुछ समझ में आने लगेगा. You will start understanding. वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ लीजिए आप, एंड डू नॉट नेग्लेक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री. आई एम सेइंग दिस बिकॉज वो मे बी डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आए एग्जाम में, बट फिर खुद से पढ़ने के बाद, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा अबाउट व्हाट आर द इवेंट्स दैट कनेक्टेड, द सीरीज ऑफ इवेंट्स का कंटिन्यूटी ज़्यादा समझ में आएगा. उसके बाद आप जो भी न्यूज़ में है उसको ज़्यादा फॉलो करें. जो भी एक मटेरियल आपको पसंद आए आप उससे पढ़ें. इंटरनेशनल रिलेशंस उसमें ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत करें, बट आंसर राइटिंग पे फोकस करें. एंड आंसर्स नीड टू बी वेरी because I know that my international relations was very strong, and when I wrote GS2 paper, I knew that those were the answers which were going to get me better marks in this paper. So I knew that I wrote good answers for international relations. So इसके लिए आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें अपना, बट राइट अवे इट्स नॉट
right away it's not the right time to go about answer writing. 3 to 4 months of preparation is required before you go for preparing for answers, or start writing answers, right? So answer writing is not your prime focus right now. Rest of GS2 basics पढ़ना होता है. Basics के लिए आप पॉलिटी गवर्नेंस, इसके लिए मोस्टली ये डायनेमिक पेपर है. सो डायनेमिक पेपर है तो आपको करंट से ही ज़्यादा पढ़ना होता है. एंड करंट न्यूज़पेपर, because I did newspapers, some people don't do newspapers. If it's okay with you to go without newspaper then it's fine, but I think newspaper से वो continuity और connect ज़्यादा easily होता है. फिर आप monthly magazine जब पढ़ते हो, you don't have to go about memorizing things. Rather you can collate the information that you have already studied. Let's say you are following the Ukraine-Russia crisis. You don't necessarily have to read every article on it, but you see that does this article has something new to offer. अगर इस आर्टिकल में कुछ ऐसा लग रहा है कि नया पर्सपेक्टिव दिया है तो आप उसको पढ़ लें. नेसेसरी नहीं है कि आप उससे नोट्स बनाएं, क्योंकि मटेरियल आता है मंथ एंड में, आप वो भी पढ़ सकते हो. आप ये जो पढ़ रहे हो लेकिन वो हेल्प करेगा. आई एम श्योर कि न्यूज़पेपर का वो पढ़ना आपको ज़रूर हेल्प करेगा, राइट? सो डायनेमिक होता है. बोथ GS2 एंड GS3 का प्रिपरेशन इज़ वेरी डायनेमिक. एंड उसके लिए आपको करंट से आपको खुद को कनेक्टेड रखना है, बट स्टैटिक अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि वो प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट होता है एंड देन वो मेंस में भी इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड अबाउट बेस ईयर, एंड वो बहुत ही पुराना कंसेप्ट था. GST वगैरह के बारे में भी बहुत साल पूछा जब वो इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो करंट था, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा you need to know about the basics of the economic system as well. So you need to understand the basics of economy, Indian economy, how it functions. ये सब जानने के बाद ही आप GS3 का प्रेप स्टार्ट कर सकते हो, right? And about GS1 is one paper which is very static in nature. So this is one paper that you can be very well prepared with. Like some people ignore arts and culture. This is not one area to be ignored. आज अगर आप हम लोग देख रहे हैं कि प्रीलिम्स में भी कितने क्वेश्चंस आते हैं, both medieval, ancient, in सब areas से. So you cannot ignore history. You cannot ignore, and for learning art and culture, you need to know the history as well. So इसके लिए क्या sources करनी है, वो already बहुत सारे even the top rankers have probably spoke about it, and the sources you can find your own sources. For example, I did the Fine Arts NCERT. I also did Nitin Sangwan sir's notes, and I did the themes new NCERTs as well, and then I also did the Tamil Nadu NCERT. So this was my preparation for ancient medieval art and culture, both in a prelims and mains perspective. And after that I did answer writing. So this was for the history. For the modern history I did Spectrum, and I also did Bipan Chandra's NCERT as well. I read it once, but mostly Spectrum. But it depends. Whichever book you choose, it's okay, but you need to do it in a way that you will be able to write answers as well. Answers लिख पाना भी बहुत important है, right? So answers कैसे लिख पाते हैं, उसमें perspective change होता है. You have to see what are the questions that are being asked over the years, because mains is more predictable than prelims, right? Prelims is becoming less and less predictable over the years. तो मेंस के लिए जब आप पढ़ते हो, रिमेंबर, someone is asking about how to remember things. रिमेंबर इतना भी कुछ रिमेंबर करने का वो लोड नहीं होता है. आप रिमेंबर, हाँ बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है, बट इट्स मोर अबाउट रिवाइजिंग एंड रिकॉलिंग. एक्टिव रिवाइज करिए आप. एक्टिव रिवाइज इज हाउ इफ़ यू आर डूइंग वन सब्जेक्ट, अगर आपने एक सब्जेक्ट का कुछ पोर्शन कवर कर लिया है, 1 वीक पहले आपने पढ़ा है या 2 वीक्स पहले आपने पढ़ा है, तो 2 वीक्स के बाद आप उसको देखें कि आपको कितना याद है, आपने कितना रिटेन किया उससे, आपने उससे कितना रिटेन किया. आप उसको एक्टिवली रिकॉल करें. जो आपको रिटेन नहीं हुआ आप फिर से उसको देख लें, रादर देन री-रिवाइजिंग थिंग्स बार. You do things in a manner that you don't have to mug up a lot.
and after doing it, for several times, I'm guaranteeing you don't have to mug up a lot of things, right? So about GS1, also geography. So geography is one very important area in mains preparation, especially because in prelims we are seeing that the number of questions are going down, but that does not mean that we need not do it, because prelims is unpredictable. We don't know what is going to be the pattern next year. सो प्रीलिम्स के लिए तो पढ़ना ही है, बट मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ज़्यादा पढ़ना होता है. तो उसके लिए हाँ, एनसीईआरटीज आर सफिशिएंट इन द मैनर की कंसेप्ट समझ में आए. बट हाँ, आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कुछ करंट ओरिएंटेड भी आ रहे हैं, लाइक एरियाज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. सो वो सब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड एनसीईआरटीज कर लिए. उसके बाद देयर मटेरियल अवेलेबल. जो भी आपको लेक्यूनाज लग रहे हैं आपके प्रेप में इन ज्योग्राफी, यू कैन कवर देम थ्रू online freely available resources. You can also watch YouTube videos for the areas which you are not, you are finding confusing. For example, cyclone का mechanism क्या है. बिना mechanism जाने आप आंसर नहीं लिख पाओगे उस पर, ना आप prelims का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. तो mechanism का कंसेप्ट बहुत अच्छे से हर एक फिनोमिना का, because phenomenas are mostly asked, you need to understand वो phenomena very thoroughly both from prelims and mains. तो इसमें डिफरेंस ये होता है, आंसर राइटिंग में डिफरेंस ये होता है कि आप जब पर्सपेक्टिव चेंज करते हो अपना कि कैसे आंसर लिखेंगे. लेट्स से वी आर रीडिंग अबाउट साइक्लोन, वी नो द कंडीशंस कि साइक्लोन्स कैसे ऑकर होते हैं. बट व्हेन द क्वेश्चन कम्स, cyclones have caused this kind of havoc. What are the ways in how we can handle this situation? We are thrown because we are just preparing कि cyclone का कंडीशंस क्या है. वी आर नॉट लर्निंग कि उसको कैसे प्रिवेंट करे या फिर उसको कैसे हैंडल करने के इनोवेटिव वेज क्या है. सो मेंस का पर्सपेक्टिव डेवलप करना इज ऑल्सो फाइंडिंग कि व्हाट इज द आंसर फॉर्मेट. जैसे कि आईबीसी फॉर्मेट इज मोस्टली टॉक्ड अबाउट इंट्रो बॉडी कंक्लूजन. तो बॉडी में हाउ टू गिव रेलेवेंट पॉइंट्स, राइट. सो वो उस पर्सपेक्टिव से पढ़ना, प्रिपेयर अबाउट सोसाइटी. सो 1 second. Yeah, so for that there are few NCERTs. I think there are 2 NCERTs which give a brief idea about what the syllabus entails. Communalism हो गया, society में women के issues हो गए, also about health वगैरह का from a social perspective. All of these things are important. So जब हम current में भी पढ़ रहे हैं तब भी हमको थोड़ा सा इस perspective उसको entail करना होता है अपने answers में. But you need to use the technical terms. So you need to prepare society very holistically, and answer writing is also again very important for that. Rest of the areas in GS1 are very static. So आप अपने preparation journey में from the very beginning you can start preparing for GS1. फिर उसको आप एक बार कंप्लीट कर लोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा. सिलेबस को अपने सामने रखें, क्योंकि सिलेबस जब आपको थॉरोली पता होगा कि सिलेबस ये है, then you won't be bothered कि क्या पढ़ना है. I'll go ahead with GS4. This is something I think I have heard a lot of aspirants being very confused about. Ethics का कैसे prepare करें, because ethics is उसका कोई syllabus है, but again फिर questions जैसे आते हैं, questions are mostly repetitive every year, but then again people find it very difficult to score or to even complete the paper. Ethics is a very lengthy paper. Let me first begin with that. Ethics is a very lengthy paper. Exam hall में complete करने में भी मुश्किल आती है paper को, because there in the case studies there are multiple sub questions in the ethics case studies. So it consumes a lot of your time. So what happens is by the end you might be compromising with your other answers. सो व्हाट हैपन्स इज, इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट एथिक्स में ज़्यादा करना होता है. एथिक्स के लिए खूब ज़्यादा प्रिपेयर नहीं. बहुत लोग एथिक्स के डिफरेंट बुक्स उठा के पढ़ते रहते हैं. कोई एक बुक उठाइए, कोई भी कोई भी बुक उठाइए. लाइक यू कैन पिक अप, देयर इज़ डिकोड एथिक्स. आई थिंक देयर इज़ ऑल्सो, I don't know, I don't remember right now the most famous book. आई एम नॉट रिमेंबरिंग, आई एम नॉट रिकॉलिंग द नेम, बट लुकमान एथिक्स के नोट्स भी आते हैं. एंड देन देर इज़ वन अदर बुक विच एवरी वन फॉलोज. सो देर सम वेल नोन सोर्सेज फॉर एथिक्स. कोई भी एक सोर्स आप एक बार पढ़ लीजिए,
फिर आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि एथिक्स में टॉपिक्स क्या आते हैं. राइट, समबडी सेड लेक्सिकॉन, या दैट वाज द बुक. सो लेक्सिकॉन तो बहुत लोग पढ़ते हैं. सो लेक्सिकॉन इज ऑल्सो वन गुड बुक. यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फ्रॉम देयर एज वेल. सो कंसेप्ट एक बार समझ लिए कि एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में क्या आता है. देयर इज ऑल्सो वन गुड सेकेंड ARC, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस करके, आई गेस, which is a very good ARC document. You can read a summary of the document, or you can also, if you have time, you can also go ahead and read the document in its entirety. By entirety, I don't mean read word by word. When you will be well into your prep, you will understand that preparing reading does not necessarily mean word by word पढ़ना. खुद ही समझ में आ जाएगा what to read and what not to read. And then again, when you are thorough with the syllabus, you'll understand what you can incorporate from every document that you are reading. You need to incorporate in your answers, otherwise they will not be able to see कि answers में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है. Answers में जो आ रहा है वही important है. ऐसा कुछ बार बार मत पढ़ते रहिए जो आप answers में फिर incorporate ही नहीं कर रहे हो. एक बार आप ethics का syllabus thoroughly देखिए, emotional intelligence, attitude, aptitude, foundational values of civil service, values, laws, ethics in international relations, emotional intelligence, and then moral thinkers, and case studies on all of these topics. So understanding this syllabus is not going to be very difficult, but beginning में थोड़ा सा difficult होता है कि ethics और values में क्या difference है, morals और values में क्या difference है, ethics और law में क्या difference है. ये differences जब एक बार समझ में आ जाएंगे, once you will be thorough with the differences, then you can move ahead to the next topic. Once you are thorough with the concepts of these, you need to be clear with one thing in ethics: definitions. Definitions are very important, so you need not necessarily memorize everything, but over time when you are prepared with the definitions, what happens is those are stuck in your mind. So when a question comes, you can directly start writing it. So ethics में definitions and examples in everywhere, in every GS paper, examples, facts, even committees. I was talking with Ankur Das. I think he secured rank 52 this year. So I was talking, this was, I was talking what did you do to, get such a good rank. So he told me that, value addition was one of the areas that he focused on. So value addition, basically he talked about making your answers concrete with examples, data, facts, committees. Giving good points is very important, but just writing a point probably wouldn't be sufficient enough. So substantiating your point with an example. Let's say if you're giving an example about police brutality. If the question is about governance and you are writing a point on police brutality, if you can give an example, let's say you can quote the example of the duo, the Jairam Benig's duo, how they were being tortured. So if you can quote that example, it adds something to your answer. You can add some kind of data. If you have memorized, you have to prepare a fact sheet before your mains. You have to identify whether that be paper wise or theme wise. That depends on you. So you prepare that data sheet, you prepare certain committees and their recommendations that you can quote in your answers. This enhances the scope of your answers. Right, so this is how you need to go about in your mains preparation. Better, of course, there will be people who will be better able to guide you, but I can tell you as much as I can understand is that I can identify the areas which needed more work, and probably that's why I can speak from experience is that कौन से areas में ज़्यादा effort डालने से या ज़्यादा कुछ करने से better answers हो पाते. About let's go about optional, जो कि मैंने already discuss किया है. I will not talk in detail about the strategy because not everybody is going to have the same optional. I had PSIR as my optional, and I prepared it through Shubhra Ranjan ma'am's notes. I also did some of the books, very selectively. I did Andrew Haywood's Global Politics. I also did Baylis and Smith very selectively, and when I mean very selectively, I do mean it as very selectively. I just found out areas which would enhance
my answers. So I did those areas. I also did the test series very thoroughly, not this year, but I did the test series very thoroughly in the previous attempt, because I was almost sure that I would clear. So I was doing the test series. This year somehow I did not write many tests. I could have, those are the things you should avoid. Writing test is important. So by talking to people like me, probably you'll understand what are the things to avoid as well. So for optionals, I think selecting the right optional is very important, and then going about by a test through a test series is also very important, because then you can do reverse learning. Through questions you can learn, right? So optionals is also very, um, it takes about 3 to 4 months of preparation, and you need to select your optional very early on in your preparation journey, so that somebody is telling me to talk about in Hindi. I don't have my mother tongue is not Hindi, so I am probably not very fluent in Hindi. So I'll try to speak in Hindi in between, but I will be more comfortable in speaking in English. So I'm sorry about that. Next is I've been asked to talk about personality test. So I'll talk a brief about the personality test, but this is just an experience. You don't need to be worried about the personality test right now. So my chairman of my panel was RN Chaube sir, and let me tell you, the experience is very cordial. It's nothing like you watch in the mock interviews, or you watch in YouTube. You see that it's very dramatic. No, it's not that dramatic. It's very it's something very smooth. Of course there will be hiccups, and of course there will be pressure building questions as well, but the panel members are very cordial, and sir was very cordial, and my experience was I realized that by the end of the interview I could not even realize that so much time has passed. My interview was around 40 minutes, so over 35 minutes I feel. But yeah, while the interview is going on, you don't understand. You realize that some of the questions you are missing, but that's okay. Not everything you will know, but that does not mean that you need to panic. So my interview experience, I was asked about racism. I was asked about the Black Lives Matter movement. I was asked about rewriting history and my opinion on it. I was asked about communal issues like changing of names of cities and places and streets, and how would I handle it. And I was asked also about my optional and some recent issues like Russia, Ukraine, or the wheat crisis which was going on during the time of my interview. And then I was also asked about my background. Questions on my electrical engineering, not very technical in nature, but what would be useful in administration, like about the power scenario, like about smart meters, prepaid meters, and about AT&C losses and how to minimize them. So those were the practical areas on which I was asked the questions. But the interview was very cordial, and with time it बहुत ही अच्छा flow से it went. So ऐसा नहीं होता है कि एकदम they don't grill you. So they try to make you very comfortable. They try कि आप लोग comfortable रहो. आपको best questions पूछे जाते हैं. अगर आप किसी question का answer ना भी दे पाओ, then they are very for example, Chaube sir told me that we appreciate the fact that आप बोल रहे हो कि आपको question का answer नहीं पता है, right? So उसमें आप डरे नहीं. इंटरव्यू के लिए आप अब से मतलब मत डरे. आपका प्रिपरेशन का जो जर्नी रहेगा उसी से आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन होता रहेगा. And again you will get enough time after your mains to prepare for interview as well. Okay, next I will go about talking. I will take all the questions, but this is at the end. I will take up the the questionnaire that has been provided to me to discuss first. About the book list, I am not going to share a book list because many of the
top rankers have already shared a book list, so that would be more helpful if you look through that. So book list is not very important. Your sources will be different. आप अपना बुक लिस्ट खुद से डिसाइड कर ले. इन बिटवीन इफ़ यू फील कि आपका बुक लिस्ट थोड़ा सा आपको ट्विक्स की ज़रूरत है बुक लिस्ट में, तो आप वो भी करें. एनीवे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी इफ़ आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश टू मच, बिकॉज हिंदी में मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है. सो आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन हिंदी एज मच एज आई कैन, बट माई हिंदी इज़ नॉट probably not that fluent, so bear with me. Yeah, bear with me. And the next thing that I was asked to talk about, answer writing ki practice. Right, very important about answer writing. In my 2020 attempt, I did not like I told you about CSAT ke karan, but that was the time I started writing answers. And for my optional, I took test series, and I took it in a formal institute, and I went and wrote test in the center. For my GS, I did not take a test series. I rather wrote answers khud se every day, not every day, but every alternate day. I used to write answers. मैं खुद से answers लिखती थी रूम पे बैठ के. And questions कहाँ से आते थे? Questions different portals से मैं उठाती थी, जैसे कि Insights का, Secure का प्लेटफॉर्म के questions हो गए, या फिर IS बाबा के भी questions थे. So वो questions मैं उठा के I tried to write my own answers. एंड उसके अलावा भी मैं सिक्योर का मटेरियल जो मंथली आता है उसको मैं सिलेक्टिवली देखती थी कि मेरे आंसर्स ठीक है नहीं है, एंड इसमें और मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ. सिक्योर के मटेरियल से कुछ डेटा हो गया, कुछ कमिटी हो गई, सो वो उठा के मैं अपने नोट्स में डाल देती थी. नोट्स मतलब मैं इतना कुछ नोट्स नहीं बनाती थी, बट माई नोट्स वेयर वेरी लाइक कि 4 कॉपीज़ हो गए, GS1, GS2, GS3, GS4. कोई कुछ एग्जाम्पल मिल गया तो उसको वहाँ पे डाल दिया, कुछ फैक्ट मिल गया तो उसको रिलेटेड उसको वहाँ पे डाल दिया, जो मैं कि अपने आंसर्स में यूज़ कर पाऊँ. राइट, सो उस हिसाब से नोट्स थे, एंड दे वर वेरी प्रिसाइज, वेरी कंसाइज. प्रॉबेबली इफ़ आई गिव अनदर अटेम्प्ट, आई वुड से कि आई वुड नो बेटर कि किस तरीके से अपने नोट्स को ओरिएंट करना चाहिए अपने आंसर्स में. सो नोट्स हैव टू बी वेरी ऐसा होना चाहिए कि आपको पता है आप कहाँ यूज़ करने वाले हो. तो GS2 के अगर आप कुछ पढ़ रहे हो GS2 रिलेटेड, या आपको कुछ कहीं न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इस टॉपिक में यूज़ हो सकता है. ये ऐसे 4 टॉपिक्स को लिंक करके भी यूज़ हो सकता है. लिंकेजेस बिटवीन टॉपिक्स बिल्ड करना स्टार्ट कर दीजिए, वो प्रिपेयर करते करते आएगा. ठीक है, तो आंसर राइटिंग के लिए आई वुड से आपको अभी से टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन करनी होती है. जो जिनको ये है कि रिसोर्सेज हैं, अगर ज्वाइन कर सकते हैं देन इट्स फाइन. बट अगर किसी के पास नहीं है, डोंट बी आप डिसहार्टन ना हो, क्योंकि आप जो है आप खुद से भी आंसर्स लिख सकते हो, बोथ ऑप्शनल्स के एंड GS के. एंड मार्केट में क्या होता है, वो मिल जाता है आपको, टेस्ट पेपर्स मिल जाते हैं जिनमें आंसर्स ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं. वो आंसर्स आपको फॉलो नहीं करने होते हैं, आप पहले खुद से लिखो, आप उन आंसर्स को देखो, फिर आप रिवर्स लर्निंग करो कि इन आंसर्स में क्या एक्स्ट्रा डाला हुआ है. टॉपर्स के कॉपीज़ देखो, ऑप्शनल में PSIR में देयर आर वेरी गुड कॉपीज़ दैट यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम, एंड डू टेक हेल्प फ्रॉम देम. आफ्टर रीडिंग दोज आंसर्स, 1-2 बार वो आंसर्स आप पढ़ लिए हो, तो आपको पता चलेगा कि आप में क्या क्या आप व्हाट एल्स यू कैन इनकॉर्पोरेट. राइट, सो उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज द नेक्स्ट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कैसे एनालाइज करें, और आर दे इम्पॉर्टेंट. येस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, especially for mains, because mains is something which is very predictable. I would say not entirely predictable, but हाँ, उसमें more or less आप predict कर सकते हो, तो along the lines आप predict कर सकते हो. तो वो करने के लिए आपको previous year question papers analyze करने की ज़रूरत होती है. So you need to analyze those previous year question papers. कैसे करें is in the market one thing that is available is theme wise segregation of question papers. Like for society, the questions of many years are collated together. So you can see that after preparing for a certain amount of time, you will understand कि
या तो आप जब उन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके सोसाइटी या आपके डिफरेंट एरियाज में आपने कवर जो करा है, जो आपने पढ़ा है, तो वो क्या, इज इट इन लाइन विथ योर प्रिपरेशन और नॉट, एंड देन try writing answers on those as well, because once and when you do that, what will happen is you will be better accustomed to handle all type of questions in the exam, right? The next question is coaching kitni important hai? Okay, right. See, I took GS classes and I took optional classes in the beginning of my journey. I did not do every class in GS, but some of the classes were really helpful for me. For example, in geography, the classes by Rushikesh Dudhat sir. Unfortunately, he is not with us right now because of COVID. But his classes were really good, and those helped me. I did those for geography, but ऐसा नेसेसरी नहीं है. आप NCERTs और मार्केट अवेलेबल मटेरियल से भी कवर कर सकते हो. GS तो स्पेशली आप खुद से कवर कर सकते हो. वो बिगिनिंग में जो थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है उससे आपको पुश थ्रू करना पड़ता है. एंड ऑप्शनल में भी मार्केट में अवेलेबल है मटेरियल, एंड आजकल यूट्यूब में भी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप कोचिंग ले के ही कर सकते हैं, बिकॉज मैंने भी सारे क्लासेस GS में करे नहीं थे. कुछ ही इंपॉर्टेंट क्लासेस जो मुझे लगे मैंने उनको कंप्लीट किया था. हाँ, मैंने ऑप्शनल के क्लासेस थॉरोली किए थे, बिकॉज आई डेवलप्ड अ ट्रस्ट विद द टीचर, एंड आई बिलीव्ड दैट इफ आई फॉलो हर देन आई प्रोबेबली कैन डू गुड. सो अगर ऐसा आप ले सकते हो देन इट्स फाइन. अगर नहीं ले सकते हो, यू कैन ऑल्सो मीट एंड टॉक विद सीनियर्स and develop the understanding about the exam, right? So it is not extremely important right now. Even अभी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसे आ गए हैं जहाँ पर कितना सारा फ्री मटेरियल, फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है. सो आप उनका हेल्प लीजिए. एंड बहुत सारा कोचिंग का मटेरियल भी फ्री में मार्केट में अवेलेबल है. आई मीन notes. So you can read those notes, whatever areas you find difficult in, YouTube it, Google it, try to understand, read from different sources and clarify your doubts, right? Next is about test series, right? Test series is very important. Test series is very important in your preparation journey, both for prelims and mains. Very important. Cannot stress the importance of test series enough. So that does not mean कि आपको 30,000 का टेस्ट सीरीज जाके एनरोल करना पड़ेगा. आप अगर एग्जाम सिचुएशन घर पे क्रिएट कर सकते हो तो आप खुद से क्रिएट करके आप घर पे लिखो, ठीक है? वो भी आप कर सकते हो. अगर आप एनरोल कर सकते हो, रिसोर्सेज हैं, तो आप वो भी कर सकते हो. बट फीडबैक के लिए देर आर सो मेनी टॉपर्स चैनल्स. यू विल सी दैट इवन 97th फाउंडेशन कोर्स people have created their telegram channels. They have shared their strategies, they have shared their answer scripts. You can compare your answers, कि क्या, कैसे आप लिख रहे हो, कैसे वो लिख रहे हैं, क्या डिफरेंट है, आप क्या उनसे सीख सकते हो, ठीक है? आपका स्ट्रैटेजी अपना यूनिक होगा, बट आप थोड़ा किसी से भी कुछ तो आप थोड़ा यू कैन एक्वायर ऑल्सो, राइट? टेस्ट सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप उस जोन में नहीं जाते हो तो आप एग्जाम हॉल में जाके यू माइट फॉल्टर, राइट? सो डू दैट. NCERTs कितनी इंपॉर्टेंट है? NCERTs मैंने सब सब्जेक्ट्स के लिए 6 NCERT से तो नहीं पढ़ा था. आई डिड NCERTs फॉर सम सब्जेक्ट्स, एंड फॉर एग्जाम्पल आई डिड द NCERTs फॉर ज्योग्राफी के लिए मैंने जो NCERTs है वो थॉरोली करी थी, 11-12 वाली. एंड हिस्ट्री में मैंने थीम्स को, न्यू NCERTs को थॉरोली पढ़ा था. इसके अलावा मैंने कुछ NCERTs पढ़े थे, जैसे पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एंड देन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आई थिंक. But mostly I did class 11 and 12 NCERTs. If you can also see from class 6 to 12 as well. That won't take much of your time. People, NCERTs करे ना करे, NCERT 6 से कैसे करें, 6 के NCERT पढ़ने में कितना टाइम लगता है? ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. तो वो उसको लेके आप टेंशन ना ले. अगर जो सब्जेक्ट्स में आपको लग रहा है कि पीछे से भी आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए, तो
आप उस सब्जेक्ट में आप कुछ एनसीईआरटीज पीछे से भी पढ़ लें. एनसीईआरटीज विल हेल्प यू फॉर्म अ बेस इन सम ऑफ द सब्जेक्ट्स जिसमें मटेरियल प्रॉबेबली उतना इजीली अवेलेबल नहीं है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनसीईआरटी कैसे पढ़े. एनसीईआरटी ऐसे पढ़े जो आपको सिलेबस के लिए रेलेवेंट हो. एनसीईआरटी ऐसे पढ़े कि आप को समझ में आ रहा है एनसीईआरटी से आप क्या समझना चाहिए. अभी जैसे कि थीम्स के एनसीईआरटीज हैं, न्यू एनसीईआरटीज की बात कर रही हूँ, हिस्ट्री में कितने इंपॉर्टेंट है वो, लाइक एंड दे आर सो नाइसली रिटन, about the traveler's journey, how it is written. When you read that you get a perspective. And ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है मेंस में. तो आप एनसीईआरटीज भी ऐसे पढ़े कि आप आंसर्स लिख पाओ उससे. ये नहीं कि आप प्रीलिम्स के ही फैक्ट्स ढूंढने में लगे हुए हो हर जगह पे. वो भी करने से आपका एक पॉइंट के बाद इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. यू हैव टू लिमिट एक पॉइंट तक कि हाँ ठीक है इतना तक पढ़ लिया, यही मेरा प्रीलिम्स का प्रेप है, अब मैं टेस्ट सीरीज के थ्रू रिवर्स लर्निंग करूँगा. ठीक है, या करूँगी. दैट शुड बी द गोल. अबाउट एनसीईआरटी न्यू या ओल्ड, ऐसा कुछ नहीं है कि ओल्ड एनसीईआरटीज आर बेटर, न्यू एनसीईआरटीज आर नॉट. You can read any. I read the new NCERTs. It is not a debatable thing. If you're reading the old NCERTs, it's also fine. New NCERTs are, stylistically different than the old NCERTs. करंट अफेयर्स की तैयारी आप कैसे करें. करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जा रहा है. तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने न्यूज़पेपर फॉलो किया था. इंटरव्यू के पॉइंट तक आई वॉज फॉलोइंग वन न्यूज़पेपर. आई वॉज डूइंग द हिंदू. देयर इज ऑल्सो अदर न्यूज़पेपर्स. इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा है. You can select between these two or some other newspaper as well. I mean, good national daily. Pick one newspaper. Do that in a manner कि आप anyway people who are asking me about asking me questions, I will come to those. But let me just address this few areas first. तो उसके बाद करंट के लिए मैंने विजन का मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ा था. कोई भी मैगजीन आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने उसको बहुत थॉरली पढ़ा था. 2019 से 2020 के एंड तक तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था. मंथली मैगजीन को मैंने बहुत थॉरली पढ़ा था. एक मंथ में मैंने उसको 2-3 बार रिवाइज भी कर लिया था. एंड आई वॉज डूइंग दोज फ्रॉम बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव, बट मोस्टली फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव. बेसिकली ऐसे कर रहे थे कि उससे इश्यूज कवर हो जाए. लाइक देयर इज एन एंटी डिफेक्शन इशू इन न्यूज़. सो जब आप उसको न्यूज़ में पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग अबाउट द डिफरेंट इश्यूज जहाँ डिफेक्शंस हो रहे हैं. उन एग्जाम्पल्स को आपको आंसर्स में यूज़ करना है. बट व्हेन यू आर ऑल्सो डूइंग द मंथली मैगजीन्स, तो वो इशू आपको एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली समझ में आ जाता है. ठीक है, तो आप उसको कॉम्प्रिहेंसिवली समझने के बाद आप उसके ऊपर एक आंसर लिखने के लिए सक्षम होते हो. तो उस पॉइंट तक जाने के लिए आपको थॉरोली हर एक इशू को ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि आप एक आंसर लिख पाओ. तो एक मंथली मैगजीन आप ज़रूर पढ़ें, एक न्यूज़पेपर आप पढ़ें, एंड कीप ऑन रिवाइजिंग दैट. हर मंथली मैगजीन को हर 2-3 मंथ्स के बाद भी प्रीवियस मंथली मैगजीन पढ़ ले एक बार. वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. पीपल आस्क मी अ लॉट ऑफ टाइम्स कि कैसे पढ़ें मंथली मैगजीन, एंड में PT 365 कर लें, ऐसा समथिंग. मंथली मैगजीन पॉसिबल है करना. अगर किसी का ऑप्शनल में ज़्यादा टाइम लगता है या वर्किंग प्रोफेशनल है, ठीक है, आप न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हो, आप करंट का डेली एक सोर्स फॉलो कर रहे हो या फिर कुछ एक अलग सोर्स फॉलो कर रहे हो, देन ऑल्सो इट्स ओके. बट इफ़ यू कैन, देन फॉलो वन मंथली मैगजीन. इट विल डू गुड. इट विल हेल्प यू इन लास्ट में in collating your data, in collating facts, and in presenting a good answer. ठीक है. So current affairs about newspaper. How important is newspaper in our journey? Newspaper is very important in our journey, especially in the beginning of our journey, because when we start reading about for someone like me, who had no background in humanities, who had no idea about humanities, and coming from an electrical engineering background, it was very important for me to grasp the different concepts, and newspaper helped me provide that base. In the beginning, I was doing newspapers for 2 hours, 2.5 hour. That's not necessary, but what happens is in the beginning we don't understand. We spend a lot of time. I was also making small notes from irrelevant facts that I was thinking कि prelims में help हो जाएगा. वैसा कुछ नहीं होता है. आप न्यूज़पेपर का जब कर रहे हो तो आपको मेंस का सिलेबस अपने ध्यान में रख के न्यूज़पेपर पढ़ना होता है. उसके बाद अराउंड 1 month, अराउंड द 2 month मार्क,
you will see that newspaper is taking hardly 35 to 40 minutes of your time. So उस टाइम तक पहुंचने के लिए आपको सिलेबस के थ्रू बहुत ही थॉरो होना पड़ेगा. आप एक बार सिलेबस से थॉरो हो जाते हो तो आप न्यूज़पेपर अच्छे से इन कम टाइम आप उसको कवर कर पाओगे. एंड इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू में, बिकॉज 2 वीक्स प्रायर करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछते हैं. तो आपको इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर काफ़ी थॉरोली करना होता है. एटलीस्ट 2 वीक्स का न्यूज़पेपर तो आपको करना ही होता है. तो न्यूज़पेपर्स आपको एंड तक पढ़ने होते हैं. बट या न्यूज़पेपर्स से ये होता है कि आप डिफरेंट एरियाज़ को कोलेट कर पाते हो, मेमोराइजेशन फिर कम हो जाता है. तो हाँ, आई वुड से इम्पॉर्टेंट है. देयर आर टॉपर्स हु हैव डन इट विदाउट रीडिंग न्यूज़पेपर्स एज वेल, बट इफ़ यू कैन and then try and incorporate a newspaper, that would ensure that आपको continuity रहेगी issues follow करने में. Then कैसे पढ़ें? आप पॉलिटिकल न्यूज़ को बस ना पढ़ते रहे. आप ऐसे न्यूज़ ना पढ़ते रहे कि यहाँ पे दंगा हो गया है, ये हो गया है, अटैक हो गया, ऐसे वही न्यूज़ ना पढ़े. आप इशू बेस्ड प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट? सो अगर जैसे कि टॉपिक है हेल्थ के रिगार्डिंग, तो जब इंडिया के हेल्थ सिस्टम के ऊपर एक आर्टिकल आता है तो आप उसको पढ़े, आप उसको समझे कि उसमें क्या पर्सपेक्टिव दिया गया है. अगर आपको लग रहा है वो पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट है, आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. आप एक पॉइंट उसका लिख भी सकते हो कहीं पे. वो अलग अलग वे से कुछ लोग करते हैं. कुछ लोग ऐसे नोट्स बनाते हैं या फिर कुछ लोग मंथली मैगजीन्स या डेली करंट अफेयर्स का जो भी है उससे कवर कर लेते हैं. बट न्यूज़पेपर्स पढ़ने से क्या होता है, आपका कंटिन्यूटी रहेगा. आप हेल्थ सिस्टम के बारे में खुद से समझोगे कि क्या सिनेरियो है इंडिया के हेल्थ सिस्टम में. सो इफ़ एनीबडी इज़ फीलिंग दैट माई हिंदी इज़ नॉट गुड एंड आई शुड कंटिन्यू इन इंग्लिश, कैन ऑल्सो कमेंट. Then magazines. Okay, so about magazines, I think if we are talking about magazines, monthly magazine is very important. And apart from that, there are some magazines which the government brings out, like the Yojana magazine, the Kurukshetra magazine. Some of those editions are very important. Not all of those editions need to be studied thoroughly, but some of एक international relations का एक edition आया था, तो वो क्या होता है, वो बहुत सारे महीनों का करंट कवर कर लेता है. उसमें आप उसको पढ़ सकते हो, उसके कुछ आर्टिकल्स आप अच्छे से पढ़ सकते हो. फिर आपको थोड़ा सा अलग एक डिमेंशन मिलेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में हो सकता है कभी they're writing from a leftist perspective, or some newspapers are writing from a rightist perspective. So probably you will get also a very central perspective as well. So try to incorporate all of these perspectives. मैगजीन्स जैसे मंथली मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. योजना और कुरुक्षेत्र सिलेक्टिवली कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आपको करना ही है, बट हाँ कुछ एडिशंस इंपॉर्टेंट होती है, उनको आप सिलेक्टिवली कर सकते हो. मेंस के आगे भी आप उसका जो फर्स्ट पेज भी होता है उसमें बहुत सारा कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ होता है, उससे भी आप बहुत कुछ अपने आंसर्स में एनहेंस कर सकते हो. हाँ, तो अबाउट मैंने कब करी अपनी जर्नी स्टार्ट. I started thinking about UPSC. I graduated in 2017, so I was working for some time. उसके बाद I thought of preparing for CAT and doing MBA. I thought of doing that. I left that idea as well, and उसके बाद I was like scrambling through कि कौन सा करे क्या ना करे. Finally, I landed upon this idea in around August-September 2018. I decided that I will prepare for civil services. बट देन उस टाइम पे आई वॉज क्लूलेस कि करना है नहीं करना है. अच्छे से 2019 से मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया. 2019 जनवरी से मैंने थोड़ा प्रिपेयर करना स्टार्ट किया. अटेम्प्ट दे दिया जबकि प्रिपरेशन नहीं हुई थी, बट उसके बाद से अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया. सो अराउंड लेट 2018 अर्ली 2019 आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस. एंड बिगिनिंग में आई हैड सम हेल्प, आई हैड सम गाइडेंस. I had some seniors who were also preparing for this examination, so मैंने उनसे भी थोड़ा हेल्प लिया. एंड हेल्प इन द सेंस मुझे पहले वो पुश चाहिए था कि कैसे स्टार्ट करें. somebody is asking me about my prelims marks, 127 marks in GS. There is no secret, you have to prepare, right? So that is the only secret. That year I knew I was thoroughly prepared, at least in GS. Unfortunately, not enough in CSAT apparently, but
I knew that I was prepared in GS. And how did I know that? Is that I was doing a very integrated study. I was prepared with my mains syllabus before my prelims. And उसके बाद prelims के पहले I did a lot of test series and I changed my mindset towards prelims. मैं वो prelims zone में I entered that zone in prelims. So GS में it's possible to score good marks. ऐसा नहीं है कि not possible है, but prelims is all about clearing the cutoff. So sometimes people clear by a point, sometimes people fail by a point. So prelims is dicey. So also be ensured that you are also prepared with your mains for that reason कि जिस बार भी prelims हो आप mains clear कर रहे हो, ठीक है. And उसके बाद हाँ, तो motivation is one of the things that we feel कि कभी कभी बहुत ही लो होता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था 2020 prelims में CSAT के कारण नहीं होने के बाद. That was one of the lowest point in my journey. So how do you keep yourself motivated after that? If necessary, take and give yourself that break. Give yourself that break of some time, whatever time that may be, maybe 1 month, maybe 2 months. Give yourself that break. Maybe take a trip, maybe talk to your parents, maybe talk to your friends, and come out of that zone, come out of that demotivated zone. Give yourself some time to relax and decide if you need to get a backup. That's fine too. If you need to enter the corporate world, or if you need to join an NGO, or if you need to give other exams as well, that's fine as well. वो भी आप कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, आप उसमें भी थोड़ा फोकस कर सकते हो. बट देन अगेन इफ यू आर क्लियर अबाउट योर गोल, be rest assured you will come back and this time with a renewed focus. So वो फोकस लाने के लिए, थोड़ा मोटिवेशन लाने के लिए आप कम्युनिटी में एंगेज करें. By community I mean the aspirant community who will share incredible stories about their journey. You will realize that you are not the only one facing it. Probably people were facing worse, and so that will keep you motivated कि keep going for more. होगा, prelims भी clear होगा, mains भी clear होगा. वो आइडिया रखिए. अगर आपको बैकअप चाहिए, आई नो दैट मेंटल हेल्थ कैन deteriorate ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन, सो वो आप बैकअप भी आप ले सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी आप 1-1.5 साल जब आप प्रिपेयर कर लेते हो, जैसे कि मुझे ऑलमोस्ट 3.5 years हो गए हैं इस जर्नी को, over 3.5 years. So around that 2 years, 1.5 years mark, I knew that I can still crack this exam with a job in hand. And I was lazy that I did not pursue it, but people can, right? So जैसे आपको motivation मिले, talking to family, talking to friends, talking to your spouse, engaging with your pets, howsoever. About timetable, I did not have a fixed timetable. All I did was, for me, maintaining a timetable was difficult, but I ensured that especially during my 2019 to end of 2020, that was where most of my preparation was. In 2021, some of the issues, some issues crept in that I faced a downward spiral in my preparation. But I would say that I had one kind of thing going on, was that I kept one app to keep myself, to record how I was performing. That app was Forest app. I'm not saying that you need to use this app. I use this app. I used to track that every day am I doing the required amount of hours. For me, hours is how I used to keep myself motivated, because मैं फिर एक रेगुलर टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाती थी. एंड मैं दिन में ऑप्शनल पढ़ती थी और एक जीएस सब्जेक्ट भी पढ़ती थी. सो ऑप्शनल दिन में मैं उस टाइम पे आई वाज ट्राइंग कि ऑप्शनल रोज़ पढूं. कभी अगर ऑप्शनल नहीं पढ़ा तो मैं 2 अलग अलग जीएस सब्जेक्ट्स इनकॉर्पोरेट कर देती थी. एंड समटाइम्स इट सो हैपन्स कि एक सब्जेक्ट से आई यूज टू गेट बोर्ड, सो देन आई रीड समथिंग एल्स एज वेल, और आई डू सम टेस्ट सीरीज. I do some MCQs, I do some test series, I listen to some videos, news videos हो गई.
और सम सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर्स की वीडियोस हो गई. सो आई यूज टू डू दैट एज वेल टू कीप कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरा नहीं पढ़ सकते हो, तो आप कभी कोई वीडियो भी देख सकते हो, स्टडी रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड. यूट्यूब में भी कितने वीडियोस अवेलेबल हैं. कभी कभी आप करंट के रिलेटेड आप वीडियोस के थ्रू भी यू कैन रिवाइज समटाइम्स, howsoever it works for you. अगर आपको टाइम टेबल बनाना है, फॉर सम पीपल टाइम टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको टाइम टेबल बनाना है तो आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको व्हाट आर द टाइमिंग्स इन विच यू आर मोस्ट प्रोडक्टिव. आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ. ये नेसेसरी नहीं है कि आपको दिन के 18 घंटे पढ़ने हैं, वैसा तो कोई नहीं पढ़ पाता है. डेली 18 घंटा कोई नहीं पढ़ पाता है, बट डेली कि आप 8-9 hours, 10 hours, for working professionals 5 to 6 hours, if you can bring out that amount of time and concentrated focused time, it's enough, right? So आप वो उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ, और ऐसे बनाओ कि आपका ऑप्शनल विद इन बिगिनिंग ऑफ 2-3 months में आप ऑप्शनल भी कवर कर रहे हो एंड गुड अमाउंट ऑफ GS सिलेबस भी आप कवर कर रहे हो, और उसी टाइम टेबल में आप टेस्ट सीरीज भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हो. नॉट नेसेसरली एवरी डे, बट इन अ स्टैगर्ड मैनर आप उसको इंकॉर्पोरेट कर सकते हो. Okay, about the medium to choose for UPSC, I had no doubt in which medium I was going to give the exam. I was for schooling or my entire education was based on English medium, so I selected English medium. But people who have different mediums can also write this exam in other mediums as well, and please don't be worried about that. Yes, one thing that comes into probably people's mind is how to get the resources. I think one of the proper inspiration for this is Ravi Kumar Sihag. He secured All India rank of 18 from Hindi medium this year, and he has given the exam previously as well. So I think उनका इंस्पिरेशन ले सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो हिंदी मीडियम के एक्सपीरियंस कि कैसे इतना अच्छा रैंक लेकर आए हैं हिंदी मीडियम में, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हिंदी मीडियम से अच्छा रैंक नहीं आता. सो आप उनसे भी बात कर सकते हो, बिकॉज मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट आप you can if he has a Telegram channel, you can reach out there. I don't know about it, but if he has shared his strategy somewhere, you can read his strategy. You can watch his YouTube videos as well. Probably he will not be available for direct messages, but you can watch his strategy or his vlogs or blogs, whatever he is providing. I'm not very sure about that. About how many hours I devoted for my study from 2019 to 2020 end. I was trying to ensure that every day I am putting a minimum of 10 hours and a maximum of I would go to 12 hours, not more than that. But every day I would think that I would go for 10 hours, but if not every day, सा हर दिन तो नहीं हो पाता. On my bad days also, I tried to do a minimum of 6 hours. This did not happen in 2021, and I think that is one of the reason that I could have done better, but better not sulk now, and try to do better if possible. But I think that continuous consistency is very important. See, when your consistency fails, bad things start to happen. So आप consistently prepare करो, आप consistently hours के हिसाब से, किसी का होता है, किसी का hours के हिसाब से नहीं होता है. So it's not necessary कि hours से ही आप count करोगे. Okay, about social media, right? So I did not have social media back then. I was using social media around March or April 2021. I started using social media a bit, but before that I did not have social media. Like when I started preparing, I deactivated my accounts. But you can use social media in a very regulated manner. If you can't, then it is better advisable to not use. Okay, and if you feel isolated, if you feel not connected, talk to your friends, call them up. Even your friends might be working, but if you have good friends, I had few good friends, and they used to pick up my call even during weekdays and sometimes weekends. So ऐसा नहीं है, फ्रेंड्स होते हैं, एंड आप फ्रेंड्स से नहीं बात कर पाते हो, आप फैमिली से बात करो, जिससे भी आपको मोटिवेशन मिले, जिससे भी आपको लगे कि आपका आइसोलेशन कम हो रहा है, या फिर आप एस्पिरेंट कम्युनिटी से बात करो. बिकॉज देयर इज़ फोरम IRS का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ एनोनिमसली आप एस्पिरेंट कम्युनिटी से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो.
उसके अलावा भी एक योलपुमता करके एक ऐप है, योलपुमता. सो देयर पीपल स्टडी. उसमें इंटरेक्शन तो उतना नहीं होता है, बट you can see that people are studying, and these are different apps. I'm just saying the names because some of these technologies can be put to good use. Okay. सिलेबस समझ नहीं आता है, क्या करें अगर. ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चंस कि सिलेबस नहीं समझ आ रहा है तो क्या करें. सिलेबस समझ आएगा, वो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सिलेबस बिल्कुल समझ में आएगा. सिलेबस को रिपीटेडली आप सिलेबस को देखें, आप सिलेबस को बार बार देखें, आपको सिलेबस से आप रिलेट करें. आप जो भी पढ़ रहे हो, आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो तो आप भी उसको, आप सिलेबस से उसको रिलेट करें. आप करंट का कोई भी मटेरियल पढ़ रहे हो, आप उसको सिलेबस तक रिलेट करते जाएं. आप हेल्थ का कुछ पढ़ रहे हो, आप सिलेबस में एजुकेशन का कुछ पढ़ रहे हो, आप सिलेबस में देख रहे हो कि वो टॉपिक है, तो उसको किस किस पर्सपेक्टिव से पढ़ना होता है, डिफरेंट आंसर्स के थ्रू आप समझने की कोशिश करो. सिलेबस को काफ़ी थॉरोली देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कांट स्ट्रेस दिस इनफ. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द सिलेबस, यू डोंट अंडरस्टैंड दिस एग्जाम. सो please do read the syllabus. Keep the syllabus in front of you. Make micro topics from the syllabus, or buy the store available micro topic listing and try and understand कि syllabus में क्या क्या entail है. And then also while reading current affairs, while reading newspapers, try to relate with the syllabus. syllabus मेरा बहुत thorough है. मुझे अभी भी मुझे syllabus की topics याद हैं. So वो होना चाहिए, आपको syllabus की topics याद रहनी चाहिए. सिलेबस आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए. ठीक है, आई विल टेक द क्वेश्चंस, जस्ट अ फ्यू मोर थिंग्स टू डिस्कस, देन आई विल टेक अप द क्वेरीज. हाँ, सो क्या आपको इस प्रिपरेशन के दौरान दिल्ली जाने की ज़रूरत है? मैं दिल्ली में थी. मैं पहले दिल्ली में थोड़ा जॉब कर रही थी, तो आई वॉज इन दिल्ली ओनली, एंड आफ्टर दैट I was staying in Delhi till 2021 February, but this attempt I gave in my hometown. I came back to my hometown. I felt that I was getting lonelier there, and I felt कि घर आके I would be more at home, and I would feel peaceful. So I came back home. दिल्ली में रहना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है. I know people who have cleared this exam बिना दिल्ली में रहे. हाँ, दिल्ली में एक competitive nature of वो फील आता है कुछ एरियाज़ में, बट वो हर किसी को ज़रूरी नहीं है. आई हैव सीन टॉपर्स जिन्होंने घर से रह के प्रिपेयर किया है. सो दिल्ली में रहना एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है. अगर आपको रहना है, अगर आप फील करते हो घर पे रह के आपकी पढ़ाई नहीं होती है, एंड यू कैन ऑल्सो गेट अफोर्डेबल प्लेसेस इन दिल्ली in and around ORN. In ORN it is costly, Old Rajinder Nagar that is, but in and around Old Rajinder Nagar, around Patel Nagar and other places, you'll get cheaper places to rent. So वैसे भी आप अगर afford कर सकते हो, you can go to Delhi. That is not an objection, but you can also prepare from your home. It's not an absolute necessity. Okay, about maps. Yeah. Okay, you have to buy an atlas. School atlas, Oxford School Atlas, and there are 2-3 good atlas. Buy one, and maps को देखते रहें. आप जो भी न्यूज़ में आ रहा है, आप उसको भी थॉरोली देखें. वर्ल्ड मैप से क्लैरिटी ले. इंडिया का मैप फिजिकल एंड पॉलिटिकल दोनों देखें. फिजिकल मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर जब आपको वो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उनका वो सब क्लियर होगा, then you will understand कि कैसे how to handle those topics in prelims, because prelims में rivers and peaks ये सब भी पूछ लेते हैं. So prelims perspective से तो काफ़ी help होता है, mains में भी काफ़ी help होता है, because this year there were questions on resources in which you had to draw maps, you had to show, and that required necessity of the understanding of how is resource distribution. उसके लिए आपको जगह का फिजियोग्राफी जानना, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो आप मैप वर्क बहुत अच्छे से करें, इसको बहुत थॉरली करें. ठीक है, मैप्स आप रोज़ देख सकते हो. आप थोड़ा टाइम 5-10 मिनट्स आप मैप देख सकते हो, कुछ क्या न्यूज़ में है. बिकॉज दिस टाइम ऑल्सो इफ़ यू सी इन प्रीलिम्स पेपर, आई हैव सीन द प्रीलिम्स पेपर, तो उसमें लिखा ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैप बेस्ड डायरेक्टली है, तो आप वो न्यूज़ में भी थे. सो जो भी न्यूज़ में होता है आप उसको मैप में देखोगे, आपको क्लैरिटी आएगी, आपको पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है. जैसे कि रेड सी एरिया कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी. आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी. ये कुछ चोक पॉइंट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में इनका इंपॉर्टेंस बहुत है.
स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया, फिर ये साउथ चाइना सी का एरिया हो गया जहाँ पे इतना कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इतने सारे आइलैंड्स है, स्पार्टली आइलैंड्स, परासेल आइलैंड्स, आपको उनके लोकेशंस पता होने चाहिए। ये सब आप मैप जब रोज़ देखते रहोगे, टाइम टू टाइम, रोज़ भी नहीं, अगर आप जब भी न्यूज़ में कुछ पढ़ रहे हो, आप उसने मैप में आपने देख लिया, उसको मार्क कर लिया, आपको ओवर टाइम वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। हाँ, about note making, it differs from people to people. I did not make notes for my prelims at all, and मैंने मंथली मैगजीन्स पढ़ी, मैंने PT 365 एट द एंड भी पढ़ा, एंड न्यूज़पेपर से मुझे अगर कुछ रेलेवेंट लगा तो वो मैंने मेंस के लिए नोट किया, एंड GS1 GS2 GS3 GS4 करके मैंने 4 कॉपीज़ रखी थी, वो मैंने आफ्टर प्रीलिम्स ही बनाई थी। सो उनमें मैंने ऐसे नोट्स बनाए थे कि मैं वो आंसर्स में यूज़ कर पाऊँ। बट अदरवाइज सम पीपल मेक थॉरो नोट्स। बट क्या होता है कि आप बिगिनिंग में नोट्स बनाने लगते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या लिखना चाहिए, आपको क्या नहीं लिखना चाहिए। मैंने एक ऐसा कॉपी रखा है जो मैंने नोट्स बनाया था, जो वो कितना बेकार था, वो कॉपी आज भी देख के आई स्माइल। सो आप जब बिगिनिंग में ही नोट्स ऐसे बनाने लगते हो, वो बहुत ही यूजलेस के नोट्स बन सकते हैं, तो वो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बिगिनिंग में आप पढ़ने पे फोकस ज़्यादा दो, बाद में आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि आपको क्या नोट्स बनाने हैं। एंड देयर सम टॉपर्स जिनके नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, जैसे दूरी शेट्टी सर के नोट्स आर वेरी directed. He wrote, he made some notes for mains, and those are very targeted notes. वैसे targeted notes आप बना सकते हो। सेकेंड ARC पढ़ रहे हो तो ARC से आपको क्या लगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आप आंसर में कोट करोगे। आप कोई कमिटी के रिकमेंडेशंस आपको लग रहे हैं, जैसे कि देयर इज स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन कमेटी ने एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। सो आप वो को पता है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और आप GS3 में उसको कहीं ना कहीं कोट कर सकते हो, तो आप उसके नोट्स बना सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट इरेलीवेंट नोट मेकिंग भी नहीं होनी चाहिए, एंड इनिशियली वो काफ़ी होता है। सो इनिशियली यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स मोर। Around 4 to 5 months of preparation will lead you in to a better understanding of what to make notes of and what not to make notes of, right? And हर एक टेक्स्ट बुक के नोट्स मत बनाइए, लक्ष्मीकांत से बैठ के आप पूरे नोट्स मत बनाइए। लक्ष्मीकांत खुद एक नोट बुक ही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का नोट ही है। सो उससे आप ऐसा कुछ बना सकते हो जिससे आपको याद रखने में हेल्प हो प्रीलिम्स में, उस तरीके के आप नोट्स बना सकते हो, ऑनलाइन बना सकते हो। देयर इज़ एवर नोट, देयर इज़ वन नोट, बट उसमें से ऐसे नोट्स मत बनाइए जो कि ऑलरेडी एक नोट है, उससे आप नोट बना रहे हो, फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप पहले उसको 2-3 बार पढ़ें, आपको समझ में आएगा कि बहुत चीज़ें तो ऑलरेडी पता चल चुकी हैं, MCQs तो सॉल्व हो रहे हैं। जो याद नहीं आता है, जिसका आप कुछ अलग तरीका, कुछ माइंड मैप क्रिएट कर सकते हो, कुछ चार्ट्स के थ्रू आप ऑनलाइन नोट्स बना सकते हो, उन चीज़ों के आप नोट्स बनाएं। ठीक है। फिर रिवीजन कैसे करें? रिवीजन एक्टिव रिकॉलिंग से करें। रिवीजन आप अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। आप अगर आपने नोट्स बनाए हैं, हाईलाइट करके आप रिवाइज कर सकते हो, रिकॉल करके आप रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने लेट्स से आपने कुछ यू रेड अबाउट एंटी डिफेक्शन और उसके लिए आपने इनफ आंसर्स प्रिपेयर कर लिए हैं, 2-3 आंसर के लिए मटेरियल आपने प्रिपेयर कर लिया है, 2 हफ्ते बाद आप जब उस क्वेश्चन में फिर से जा रहे हो, उस टॉपिक में फिर से जा रहे हो, आप रिकॉल करो कि आपको कुछ याद है, एंड अगर आपको याद है तो कितना याद है, एंड कितना याद नहीं है। आपने जब याद कर लिया उसके बाद आपको कितना याद नहीं है, वो आप देख लो कि क्या था, क्या छूट गया आपका। वो जब आपका छूट गया, फिर तब आप देन यू अंडरस्टैंड कि क्या व्हाट इज़ लेफ्ट आउट एंड व्हाट यू नीड टू रिवाइज नाउ। सो रिविजन ये भी नहीं कि आप बस पढ़ते रहो। एट द एंड you will realize that बहुत चीज़ें you have already consolidated in your mind, right? It also depends कि आपको कितना टाइम मिल रहा है। कुछ some people will be getting less time, but it also depends how actively you are preparing, how consistently you are preparing. So if you are consistent, you will understand. Beginning में understanding में issue होता है। For me, जैसे कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, so I took a little bit of time in understanding only. बट वंस आई रियलाइज़ कि अब समझ आ रहा है, सो उस पॉइंट से मैंने जो भी पढ़ा मुझे एटलीस्ट समझ आ रहा था। इट वॉज नॉट हैपनिंग कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वो समझ आ रहा था। एंड लेट मी स्टेट वन थिंग फॉर प्रीलिम्स में आपका पॉलिटी और आपका इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। वो स्ट्रांग होने से आपका प्रीलिम्स क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो वो बेसिक्स आप क्लियर कर लो कि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस तो गलत ना ही करें।
एंड फिर हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो इतने ही टफ आते हैं, जितना हो सके आप कर ले, बट अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है सो डोंट टेक इट टू योर हार्ट, इट इज़ ओके, ठीक है। लेकिन बाकी के क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, करंट आप अपने टिप्स में रखें, ठीक है। करंट के लोग बोलते हैं करंट के क्वेश्चंस नहीं आते, ऐसी बात नहीं है। आप जब कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, वो जो आप पढ़ रहे हो वो डायरेक्टली ना भी आए, वो आपको हेल्प करेगा इन एलिमिनेशन। सो प्लीज़ रीड करंट, डोंट अवॉइड करंट्स, क्योंकि करंट वैसे भी मेंस के लिए पढ़ना है, उसको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी पढ़े। याद तो आपको रिवाइज करने से ही आएगा। लोग पूछते हैं कैसे याद रखेंगे, रिवाइज करने से, रिकॉल करने से, उसको नोट डाउन करने से, किसी तरीके से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अपनाने से, यू नो, इवन क्यू कार्ड्स, यू नो, डिफरेंट वेज फॉर यू टू रिकॉल, ठीक है। हाँ, पढ़ाई में मन कैसे लगाए, एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है। पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको अपना मोटिवेशन क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों इस जर्नी में एंटर करे हैं, एंड व्हाट इज़ योर प्राइम गोल। यू नो, आपको कौन सा सर्विस आपको डेडिकेट, यू नो, आपको कौन सा सर्विस आपको इंस्पायर करता है, एंड या फिर आपको ये एग्ज़ाम क्यों क्रैक करना है, you know, what is your motivation. Probably your parents might be one of the reason for your, you know, motivation, or your friends are helping you in keeping that motivation alive. So find your motivation, find your goal, and keep that goal in your mind while preparing. If need be, you can also prepare after enough, you know, enough preparation for prelims. Sorry, I mean enough preparation. You can also choose for while working as well. It is possible. I have seen people do it. And क्योंकि 1-1.5 साल पढ़ने के बाद आप बहुत कुछ समझ जाते हो, उसके बाद आप जॉब के साथ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई विल टेक अप सम क्वेरीज राइट नाउ. सो यहाँ पे आई विल सी व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड. आई विल टेक अप द रेलेवेंट क्वेश्चंस. Okay, so someone is saying that they are staying in मुखर्जी नगर and वहाँ पे मन नहीं लग रहा है, तो क्या आपको घर चले जाना चाहिए? देखिए, नए जगह पर कभी कभी मन नहीं लगता है, सो इतना जल्दी आप डिसीजन मत लीजिए कि आपको घर जाना चाहिए, अब ये आपको घर नहीं जाना चाहिए. बट हाँ, अगर कुछ टाइम रहने के बाद आपको लग रहा है कि यू नो दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू, देन अगर आप घर से प्रिपेयर कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं. बट हाँ, कुछ टाइम आप दीजिए, आप कुछ टाइम ट्राई कीजिए, आप कनेक्ट कीजिए लोगों से भी. उसके बाद अगर आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू, देन डेफिनेटली यू कैन गो बैक होम. माई ऑप्शन is PSIR. I have already talked about it. I don't have any Telegram channel. Yeah, so mistakes. Somebody is asking me about the mistakes. Like I said, not preparing CSAT enough was one of the grave mistakes I made, you know, taking it lightly. So I think that needs to be avoided for people who are, you know, probably not that strong in CSAT, or who have, जो लोग ऐसा है कि पैनिक कर जाते हैं एग्ज़ाम में कभी कभी, क्योंकि CSAT का पेपर ऐसा होता है कि आपको जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है. तो आइडेंटिफिकेशन का गेम होता है CSAT, तो आप उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए. उसके अलावा मिस्टेक्स ये कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच जो टाइम था उसको मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करा. प्रॉबेबली उसी कारण कुछ एरियाज़ में मेरे मार्क्स थोड़े कम आ गए. सो आई थिंक वो अवॉइड करना है. प्रीलिम्स के बाद आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करें, आप मेंस की जर्नी के प्रिपरेशन में लग जाएं. बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करें, बहुत कम टाइम होता है. हमारे टाइम पे और भी कम टाइम था. It was around 85 or 86 days that we got between prelims and mains. You can give 2 to 3 days or at max 5 days. आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, आप किताबों को अरेंज कर लो उस टाइम पे, पर उसके बाद आप स्पेक्यूलेट मत करो एंड गो अबाउट योर प्रिपरेशन विथ फुल स्पीड फॉर मेंस, क्योंकि उसी टाइम पे गेम चेंज हो सकता है. अब प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, गेम आपकी तरफ, बिल्कुल आपकी तरफ जा सकता है. ठीक है. ओके, माई ऑप्शनल सब्जेक्ट, हाउ many hours did you devote for your optional subject? I devoted a lot of time for my optional subject. It was a new subject for me. So for me to understand the subject and to, you know, write answers on it, it took a lot of my time. So yes, I did devote a lot of time on my optional. How to judge our preparation level? By the standard of your answers, and by you know, how you are feeling about your prelims preparation as well, and by the you know, the feedback that you are getting on your answers, and how you are feeling about
द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस. सिलेबस को कितना समझ आ रहा है और आप कितना कंप्लीट कर पा रहे हो, आप खुद समझ जाओगे. फील लो अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है. सो प्लीज़ आप प्रीलिम्स पे भी फोकस रखें अपना. मैंने अब कहाँ से कोचिंग की, आई ऑलरेडी स्टेटेड दैट. About PSIR, ma'am's coaching notes versus standard books. I did the coaching notes first, and I did some value addition from the standard books. Right? I don't have a Telegram ID, sorry. Spectrum और लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ें? Thoroughly पढ़ें. लक्ष्मीकांत एंड टू एंड पढ़े, स्पेक्ट्रम भी एंड टू एंड पढ़े. आप अगर स्पेक्ट्रम चूज कर रहे हो, एंड टू एंड पढ़े उन्हें. एनसीईआरटीज अगर कोचिंग में कर रहे हो तब भी अलग से पढ़े. एनसीईआरटी पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. ठीक है. आई रेड न्यूज़पेपर. आई डिड नॉट गो फॉर यूट्यूब डिस्कशन. समटाइम्स व्हेन आई स्किप्ड द न्यूज़पेपर आई वॉच्ड सम ऑफ द sometimes I used to watch, but that was not my primary वो. My educational background I already stated. I'm an electrical engineer. Geography के लिए preparation कैसे करा? Since geography is not my optional, for me geography के लिए I prepared through my class notes and NCERTs. I also did GC Leong and उसके notes बनाए थे मैंने, not from all the chapters. Second attempt में मेरा CSAT रुक गया था, इसी कारण नहीं हुआ था. बेस्ट सोर्स फॉर करंट अफेयर्स. जैसे मैंने विजन फॉलो किया था, आप कुछ और भी कर सकते हो. राउज की भी आती है मंथली कंपास, उसको भी फॉलो कर सकते हो. फोरम का भी आता है, जो भी आपको ठीक लगे. हाँ, येस, आई रोट रिसर्च इज अ ब्लाइंड डेट विथ नॉलेज. दैट इज द एसे आई रोट. एम आई गिविंग अगेन? आई हैव नॉट येट डिसाइडेड. Confused about sociology and PSIR. Okay, find your interest first and then you find out कि जिसमें resources ज़्यादा available हैं, and ये कि previous year question papers देख के and syllabus देख के within give yourself 2 to 3 months थोड़ा 1-2 books आप खरीद भी सकते हो अगर आप ला सकते हो, या किसी से borrow कर लो. मत खरीदो, borrow कर लीजिए. फिर आप उनको देख लीजिए एक बार. 1-2 बुक्स को आप देख के आप समझ लेंगे. फ्रेंड का निकल जाए और आपका ना निकले तो काफ़ी बुरा लगता है. बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए. हाँ, थोड़ा अपने लिए बुरा लगता है, बट आपको दूसरों का क्लियर होने से बिल्कुल नहीं बुरा लगना चाहिए. ये एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है. किसी का होने से आपको उनका भी सोचिए कितना लो के थ्रू दे हैव बीन थ्रू टू क्लियर दिस एग्ज़ाम. अपने लिए हाँ बुरा लगता है, दैट इज़ द ट्रुथ. हाँ, थोड़ा अपने लिए बुरा लगता है, बट फिर अपना जर्नी अलग होता है, सबका जर्नी अलग होता है, ये ध्यान में रखें. ठीक है. हाउ मच टाइम, दैट जेन्युइनली नहीं बोल सकते, सबके लिए अलग टाइम लगेगा, बट 1-1.5 साल पढ़ना पड़ता है. इन माई फर्स्ट 2 attempts आई डिड नॉट क्लियर प्री for some reason or other. First time I missed by less than 2 marks and next time as I already said, because of CSAT. but उसके बाद भी मैंने अपना 3rd attempt दिया था. तो आप उसको लेके आप डिमोटिवेट मत हो. ऐसी बहुत सारी जर्नीज़ हैं. आप और एक अटैम्प्ट दीजिए. आप इस बार थॉरोली प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का पढ़ें. फॉर इकोनॉमिक्स, फॉर इकोनॉमिक्स इन प्रीलिम्स आई डिड मुनाल सर्स क्लास नोट्स. मार्केट से मिलती है, मैंने वो करे थे. एंड उनके वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल थे, मैंने कुछ देखे थे वो वाले वीडियोस भी. मेंस के लिए मैंने डायनेमिक ज़्यादा पढ़ा था. डायनेमिक यानी कि करंट अफेयर्स मटेरियल ज़्यादा फॉलो करा था और आंसर राइटिंग पे फोकस रखा था. प्रीलिम्स के लिए मैंने मुनाल सर से अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी. एनी टिप फॉर वर्किंग प्रोफेशनल? सिंस आई वॉज नॉट वर्किंग, तो बट स्टिल आई वुड से कि अगर आप टाइम निकाल सकते हो तो आप 4-5 घंटा आपको थोड़ा सा आपको वो टाइम निकालना पड़ेगा. और नोट मेकिंग के लिए ये जो आप लोग टिप्स पूछ रहे हो, आई वुड से नोट मेकिंग तब करिए जब आपका प्रिपरेशन काफ़ी लेवल तक पहुंच गया हो. 4-5 मंथ्स आप प्रिपेयर करें पहले, फिर आप नोट मेकिंग का बारे में सोचें. ठीक है. उसके बाद हाउ मेनी आवर्स, इट डिपेंड्स. Try to consistently study for a minimum of 8 to 9 hours every day. For some people it might be more. हाँ, मैंने लगातार पढ़ाई करी थी. ब्रेक लिया था मैंने 2020 प्रीलिम्स के बाद, जब मेरा
वो बहुत ही लो पॉइंट था मेरा, क्योंकि वही अटेम्प्ट था जो मैंने अच्छे से पढ़ के दिया था. सो उसके बाद मैंने हाँ ब्रेक लिया था. इस अटेम्प्ट से पहले मैंने 4 to 5 months I went into a kind of a break. NCERT or reference material, which is better? Read the NCERTs once and then go for reference material. Okay. How did I manage my friends घर वालों का काम? I was not doing घर का काम because I was staying in Delhi and my parents were understanding enough. तो उस हिसाब से मुझे घर का काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. मेरे फ्रेंड्स भी बहुत ही मोटिवेटिंग थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया. आई थिंक इस बार का अटेम्प्ट आई वॉज अबाउट टू स्किप 2021 वाला अटेम्प्ट, एंड बिकॉज आई वॉज फीलिंग सो लो, एंड उस प्रीलिम्स के पहले आई वॉज टेलिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स कि यार मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, एंड उसको उतना इस एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता है, बट शी स्टिल कन्विंस्ड मी कि एग्ज़ाम दो. एंड मैंने फिर प्रीलिम्स दिया एंड फाइनली रैंक भी आई. सो आई एम ग्रेटफुल टू हर एज वेल. ऑप्शनल मेरा PSIR है. गुड इवनिंग. सर्विस एलोकेट नहीं हुई है अभी. ऑप्शनल स्ट्रैटेजी. ओके, ऑप्शनल स्ट्रैटेजी यही थी. मैंने जो मैंने मैम की क्लासेस करी थी वो क्लासेस के नोट्स मैंने थॉरोली करे. उसके अलावा मैंने कुछ बुक्स फॉलो किए, लाइक ग्लोबल पॉलिटिक्स हेनरी हेवुड की, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हेवुड की, एंड ओपी कॉबा बहुत ही सिलेक्टिवली पढ़ा था ये सब कुछ. उसमें से थोड़ा छोटा छोटा नोट्स बनाया था एंड उसको आंसर्स में इंकॉर्पोरेट करने का सोचा था. एंड आई डिड ईयर लॉन्ग, आई जॉइन द ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज. सो मोस्ट ऑफ माय ऑप्शनल प्रिपरेशन इज द टेस्ट सीरीज. करंट अफेयर्स प्री के टाइम तक 1 महीने पहले आप बंद कर सकते हो. 1 महीने तक का आप पढ़, 1 महीने के for 1 year, cover 1 year, 1.5 year current affairs for prelims. How to enhance answer writing quality? By joining, by writing answers frequently, and by getting them evaluated through seniors or through teachers, and also self-evaluation by looking at toppers' copies as well. Yes. How अपने mental health के बारे में. So, I took therapy as well for to overcome that kind of low phase. Personal reasons भी थे कुछ, and so I took that, but I can understand not everybody can, so I also, my friends, as I said, helped me and motivated me a lot. Family से भी interact किया, my cousins, everyone was so motivating and everyone was helping me overcome the low phase. And ये low phase सिर्फ एग्जाम के कारण नहीं होता है, बहुत काफ़ी रीजंस के कारण आ जाता है. तो मेरे लिए 2021 काफ़ी लो था, उसमें मैंने कुछ रैंक लाया, तो आई एम हैप्पी अबाउट इट बिकॉज आई वॉज फीलिंग वेरी लो एट दैट टाइम. सो वो उस हिसाब से आई एम टॉकिंग अबाउट इट ओनली बिकॉज आई वॉन्ट यू टू नो दैट people on the other side have also been low in their journey, so you can also come out of it. कॉलेज के साथ कैसे पढ़ें? मैंने तो कॉलेज में सोचा भी नहीं था. आप कॉलेज में सोच रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन थिंकिंग सो वे अहेड. सो कॉलेज के साथ आप कॉलेज का पढ़ो, एंड साइड बाय साइड आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहो. आप सिलेबस के साथ ओरिएंटेड हो जाओ, वही काफ़ी है. उसके बाद आप बाय द लास्ट ईयर आप सिलेबस के साथ जब ओरिएंटेड हो, तब आप धीरे धीरे आप बुक्स पिकअप करके, बेसिक बुक्स पिकअप करके, रेफरेंस बुक थोड़ा सा स्टडी कर लो. उसके बाद आप 1 साल आप लेकर अच्छे से प्रिपेयर करो. प्रिपेयर करंट अफेयर्स इन द बिगिनिंग न्यूज़पेपर्स के थ्रू ही पढ़ना होता है. उसके बाद आप एक वो डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हो, एंड देन मंथली करंट अफेयर्स. इंग्लिश के लिए क्या क्या करें? आई एम अज्यूमिंग दिस इज़ अबाउट कॉम्प्रीहेंशन फॉर द CSAT. सो कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करें, उनके आंसर्स कैसे UPSC ने दिए हैं वो उस हिसाब से आप देखें कैसे करना है. एंड अगर दिस इज़ फॉर द लैंग्वेज पेपर और द क्वालिफाइंग पेपर इन मेंस, तो वो आसानी से क्लियर हो जाता है. आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा ऑप्शनल है. आई हैव फ्रेंड्स जिन्होंने लिया हुआ है. हाउ टू रीड स्पेक्ट्रम फॉर मेंस? देखिए, मेंस के लिए स्पेक्ट्रम क्या होता है आपने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ लिया होता है, तो आपको बेसिक तो पता ही होता है. उसके ऊपर आपको आंसर राइटिंग पे ही मेंस के लिए फोकस रखना चाहिए. और अगर आपको कुछ एनहांस करना है तो आप कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल आप फॉलो कर सकते हो.
क्लास नोट्स कर सकते हैं आप. उसके अलावा यू कैन सिलेक्टिवली रीड सम ऑफ द गुड बुक्स एज वेल. बट आई एम सेइंग सिलेक्टिवली, हर चीज़ के लिए बुक्स मत उठाए. Okay, so for people who are taking classes, do revise the things that are being taught in the class. Trust in the teacher. If he is teaching nice, he or she is teaching nice, do trust in the teacher. Answer writing from zero, my vocab is not good. Vocab does not matter. Vocab की importance उतनी नहीं होती है. So answer writing आपको start करनी है. तो आप how to start answer writing? तो आप beginning में you can start answer writing by seeing what others are writing, what other toppers have wrote, and उनके स्क्रिप्ट्स को थोड़ा फॉलो करके. बट अगेन बिगिनिंग से ही नहीं करना होता है, कुछ एक अच्छे लेवल का पढ़ाई हो जाए तब आप करें. एंड करेंट अफेयर्स फॉलो, जो क्लासेस में आपको पढ़ा रहे हैं वो आप रिवाइज करें. एंड करेंट अफेयर्स आप डेली आके न्यूज़पेपर देख ले. एंड डेली का करेंट अफेयर्स का जो एक कुछ भी एक आता है वो भी आप चेक कर सकते हो. उससे क्या होता है, आपका कंसोलिडेट हो जाता है. एंड देन यू कैन डू वन थिंग कि कोई भी जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चीज़ें आती हैं तो वो मीन्स पर्सपेक्टिव से भी फिर कवर हो जाता है. एक दो आंसर्स आप लिख लो, बाकी क्या आप पढ़ लो. जैसे कि सिक्योर का आता है, सिक्योर इज गुड इनफ. एज एन मैकेनिकल इंजीनियर, व्हिच ऑप्शनल सब्जेक्ट टू चूज? वेल, इफ यू आर नॉट चूजिंग मैकेनिकल एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, देन यू कैन चूज एनीथिंग आउट ऑफ द बुक्स. ये मेरा थर्ड है. स्ट्रैटेजी आपको, जो आपने एक तरीके से ख़त्म कर लिया हो उसको आप 2 हफ्ते बाद फिर से रिकॉल करें, फिर से उसको आप देखें. लक्ष्मीकांत एक बार आपने ख़त्म कर ली हो तो उसको आप कुछ टाइम छोड़ दें. आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, आप कुछ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप सोसाइटी पढ़ रहे हो, आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हो, लेकिन वो पढ़ने के बाद आप फिर से पॉलिटी पढ़ें. आप एक बार फिर से उसको देखें, उसको रिकॉल करें, कुछ MCQs सॉल्व करें, कुछ आंसर्स लिखें. इससे ही रिवाइज होता रहेगा. डोंट वरी. For a beginner, how to start? For a beginner to start, I would say start by knowing the syllabus, and then once you understand the syllabus, understanding काफ़ी टाइम लगता है, but beginning में syllabus को थोड़ा सा जान ले. उसके बाद you can go about reading the newspapers, and newspapers को selectively पढ़े in the manner कि syllabus को cover कर रहे हो. syllabus से आप उसको relate कर करके पढ़ रहे हैं. and with a private job also preparation हो सकती है. 9 to 5 जॉब होता है. 5 बजे के बाद आप फ्री होते हो, आप 1-2 घंटा रेस्ट लेके आप रात तक पढ़ सकते हो. रात 1-2 बजे तक पढ़ के आप 5 to 6 आवर्स का आप स्लीप लेके सुबह निकल सकते हो. बट हाँ, आपको थोड़ा सा उसमें काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत होगी. आप टायर्ड हो जाओगे. तो वीकेंड्स पे आप ज़्यादा टाइम डिवोट करो, एंड वीक डेज पे आप 4 to 5 आवर्स, जितना 5 to 6 आवर्स जितना हो सके कंप्लीट फोकस से पढ़ो, जितना भी पढ़ रहे हो. Okay, I think there is a audio problem, so I'll end the session here. It was nice talking to you. We'll take more queries. You can connect with me on my social media, on my Telegram. There I'll be answering more queries. ठीक है? Okay, I'll be ending the session now. Thank you. You can send your queries to me on Telegram as well. Thank you.